Hello everyone, what's up? Good evening, welcome to Gradeup. Say a quick hi guys if you can hear me. Let's see who is present in today's session. My name is Krishnendu everyone, and let's get going with the session here. Okay, so whether you're watching me on the YouTube or on the app, you can say hi. Ghar se. Now corona thing is getting out of control, so I hope all of you are taking precautions and very importantly wearing mask whenever you are in and around people, right? Okay, Madhuri, Pranay, and who else? Janvi, Shivaji, in fact. Hi guys, good to see you. And who else is there on the app? Spriha is there, Ishwari is there. Okay, now so I have all category of students in the class, and I'm very happy about it. Though remember guys, this session is primarily towards kind of looking at those who are thinking long term and they are thinking about CLAT in 2022. But the basic idea remains the same whether you're taking CLAT 21 or 22. तुम 21 दे रहे हो 22 दे रहे हो, it doesn't matter. The basics are similar. So I would just show you that when you read, you should be extra careful because extra careful reading can get you right answers faster. So this is for CLAT 2022, of course, that's the target group, but very clearly you are most welcome even if you're targeting 21, CLAT 21, okay? So I can see Shahid as well now, Abhishek also, and KP, Tejaswi, and KP Singh Pailagut Sarji. Okay, welcome KP. All right guys, so let's begin. Before I move on, I hope you know that we are sort of celebrating the month of April. We are giving great discounts, and we want you to have this zid to score very well. We are giving 45% off on Gradeup Super, and all you need is the coupon code. Okay, so let me be very quick. We have launched the third batch for CLAT 2022. So if you have still not joined us, don't still wait, join. If you are in class 11th, obviously this is the right time to join so that you prepare along with your school, right? So देख लेना, अभी तक join नहीं किया है तो पक्का करना. One more thing, if you are watching my session on YouTube, make sure you like the session and very importantly, you also subscribe. Now, if you are thinking about CLAT 2021, our crash course is running, and there are crash courses for specific colleges also. For example, BHU, BLAT and Jamia, we have a batch. We also have a batch for the CLAT exam as such, booster crash course. तो आपको हर तरह के पेपर्स के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कहीं जाना मत. You know where to join. Okay, you can join the program for 2021 CLAT. You will get 3+1 month. But if you're targeting CLAT next year, then it is 12+2 months. Okay. You have more queries, you can talk to our counselors at these numbers. You can WhatsApp or you can call straight away. Perfect. So if you have not started yet, make sure you watch my previous videos where I have talked about what to do, what to read. For example, the previous video was about reading itself. क्या पढ़ना है, कौन सी बुक, कौन से न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह वगैरह, तो उसको वॉच कर लेना. अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बता देना, शेयर वेयर कर देना, सो दैट दे ऑल्सो आर अवेयर. फ्रेंड्स की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है ना. सो Sarah is present now, and Sarah is saying hello to everyone, of course, but except the faculty. Sarah, hi. Okay, so let's move on. And who else is there? Shraddha is there, Riba is there, Priyanshu and Kirti, or पता नहीं और कौन है, Amisha Sharma, Watanpreet is there. Okay. So I'm keeping the session very short, concise, to the point guys, because थोड़ी देर बात करते हैं but point की बात करते हैं, है ना. Amisha, I'm great, I'm doing pretty fine. How are you? Okay, so let's begin. तो आप ग्रेडअप का ऐप तो डाउनलोड कर ही चुके हो अभी तक, मुझे पता है. नहीं किया तो कर लेना. You can do it from the Google app. Alright, now my name is Krishnendu Dutta. If you have not followed me on the app, you can do that. You would get notifications when I take mini series, which I do very often. तो वहाँ पे आ जाना. वहाँ पे ऐप में जो सेशंस होते हैं वो फिर आप यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होते, तो आपको डबल बेनिफिट होगा इफ़ यू हैव द ऐप. ओके, तो डाउनलोड कर लेना, फॉलो भी कर लेना. बराबर, काफ़ी बता दिया. अब हम चलते हैं. CLAT 2022 स्पेसिफिकली, बट 21 के लिए भी इक्वल रिलेवेंट है. विल कीप इट वेरी सिंपल. तो हम आज बात करेंगे शर्लक होम्स. नाउ यू नो हु शर्लक होम्स was. He was a great detective and he was very famous for his dialogue, and dialogue was, it's elementary,
माय डियर वॉटसन, वॉटसन वॉज हिज असिस्टेंट. तो उनका ये बहुत फेमस डायलॉग था दैट इट्स एलिमेंट्री. एलिमेंट्री, बाय एलिमेंट्री वर्ड ही मेंट दैट whenever you are looking at something, no, look at the basics, look at the core things, look at the foundational points. उन बातों पे ध्यान दो जो बेसिक हैं, क्योंकि बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं देते. Correct? There's a very famous story where a number of animals were kept inside a kind of fence. You understand fence? Fence के अंदर there were a lot of animals kept inside it. Giraffe was there and the lion was there and the tiger was there and the bear was there. सब थे उसके अंदर. तो सब जैसे उसके अंदर फंस गए तो सब अपने तिकड़म में लग गए. कोई फेंस में लात मार रहा है, कोई इसे काट रहा है, कोई इसे खींच रहा है, कोई इसे गिरा रहा है, और शेर बैठा हुआ बड़ा आराम से. So people were like, you are lazy, you are doing nothing to get yourself out of this situation. हम सब फंसे हुए, तुम बैठ के मजे ले रहे हो, धूप सेक रहे हो. So the lion says that I am basically not lazy, I am not wasting time, I am just studying the nature of the fence. Unless you understand what is it that is keeping us inside, what is the strength of the fence, what is the height, how far it is within the underground, or how thick it is, what material it is, all this pushing and pulling will do nothing. Always remember, study the nature of the fence. What is it that is pulling you back? Once you understand that, you would be very, very good with pulling down any kind of fences. Whatever keeps you down, you'll be able to get through it. But हम क्या करते हैं, हम बस लग जाते हैं. We never look at the basic points. Reading में याद रखना, reading में we keep on saying that if you are doing reading for CLAT, you have to basically go for what? Basic points. You have to look at the words, interpret them, never get your interpretation there. You have to basically just stick to the information, get into the author's head. That's how Sherlock Holmes thought. He was absolutely superhuman for his power of observation. तो बहुत ही कमाल करते हैं. अगर तुमने बुक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा what I'm talking about. Yes. So स्पृहा, yes, that's correct. तो हम भी यही करने वाले हैं. We'll just quickly understand that what exactly should we do when we are preparing for CLAT, especially if you have more time, like you have CLAT next year. इस साल है तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. नेक्स्ट ईयर है, कम कर सकते हो, बट नेचर ऑफ द वर्क इज सिमिलर. ओके. सारा इज सेइंग हाई, बट दैट टू इन अ सेंटेंस. तो मैं पढ़ने लग गया व्हाट एग्जैक्टली शी सेइंग. ओके, ऑलराइट. हेमंत, गुड टू सी यू. UH, good to see you. Madhuri Allah says Sherlock Holmes is a detective who is fictional. Absolutely, he was a fictional character. It's the author who was the brain behind it. But जैसा हमेशा होता है, हम fictional character से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना. तो आपको वही करना है. So how does it help in CLAT? RC and CR both, दोनों में हेल्प करता है. Sherlock Holmes की तरह सोचना. कैसे हेल्प करता है? First is that in RC and CR both, the answers are in plain sight. आंसर आपके आंखों के सामने होता है, because it is in the information provided. आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज गिवन. आपको कोई मेमोरी बेस्ड आंसर नहीं करना. यू डोंट हैव टू रटाफाई द आंसर. यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय रोट. कुछ नहीं करना. आप बस पैराग्राफ पढ़ो और आंसर करो. हम वो भी नहीं कर पाते. डू यू रियलाइज दैट? इवन इफ यू आर टारगेटिंग CLAT 2021, डू यू रियलाइज कि हमसे जब RC या CR नहीं होता, देन व्हाट इज हैपनिंग? हम पैराग्राफ पढ़ के समझ नहीं पा रहे. कितना बेसिक काम हमसे नहीं हो रहा. वी कांट डू अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी कांट रीड एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन. दुख की बात है. दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बिकॉज दीज क्वेश्चंस डोंट से ओके टेल मी अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 3 आर्टिकल नंबर 5 आंसर क्या होगा. इट डजंट से दैट. इट सेज पढ़ के बताओ. ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू जस्ट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन राइट. बट हमसे वो भी नहीं होता. And that is why Sherlock Holmes type observation skill is required. Pay attention to every word. Get your biases out of it. Bias लेके मत चलो. आप biases लेके मत आओ. Just don't read with bias. Just read the information. Try to interpret it. Correct? जैसे if you are targeting CLAT 22, then obviously I would want your answer first, because अगर आप 2021 कर रहे हो, then you have been preparing for a long time, है ना. तो बट ईदर वे इट डजंट मैटर रियली. तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ, फिर हम बात करते हैं. जल्दी से बताओ आपको क्या ढूंढना है, मैं बता देता हूँ. यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस
must be true according to the information given. ओके, इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जरूर ट्रू होगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. ओके, प्लीज रीड एंड टेल मी विच वन मस्ट बी ट्रू. चलो, आशीष सिंह राजपूत हैज कम एंड सेइंग हाय. हाय आशीष. अमीशा शर्मा, ठीक है. CR इज क्रिटिकल रीजनिंग, RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो मेरी पिछली क्लासेस नहीं की हैं तो कर लेना पक्का, ऐप पे भी और YT पे भी. ओके. मीनाक्षी से इस पैसेज में आंसर होते ही नहीं है. मीनाक्षी, आंसर पैसेज में ही होते हैं, हमें पैसेज के बेसिस पे निकालना होता है. बाई सेइंग पैसेज में होते हैं, आई डोंट मीन लिखे होते हैं, बेसिस सेम होता है. यू अंडरस्टैंड. A फॉर श्योर, आयुष कह रहा है वैसा. अमीशा शर्मा, कैन यू ट्राई. चलो, आंसर्स आने लग गए, बहुत बढ़िया. गुड गाइज, दैट्स सम ऑसम स्पीड, वेरी गुड. बट सबके आंसर सही नहीं आ रहे, आई कैन सी दैट. सो आई एम ग्लैड दैट सम ऑफ यू आर गेटिंग इट राइट, बट थोड़ा दुखी हूं कि सबके आंसर सही नहीं आ रहे. ओके, ऑल राइट. चलो, हर्षिता, दैट्स करेक्ट. यू डोंट हैव टू बी सॉरी, टोटली फाइन, यू आर राइट. सो माधुरी says D, शिवाजी says D, शाहिद says A, जानवी D, प्रणय A, UH says D. What is your name UH? नाम बताओ. UH तुम्हारा नाम होगा नहीं वैसे. और कौन क्या कह रहा है. ईश्वरी, सेजल, शर्मिष्ठा, सृष्टि, प्रियांशु, कृति, श्रद्धा, अमीशा, इन लोगों का आंसर A है. प्रणय का आंसर D, सारा का आंसर D है. ओके. नो, प्रणय कथा, आई थिंक यू जस्ट चेंज योर नेम. हाँ, चेंज योर आंसर. प्रणय हैज मेड हिज आंसर A. राधिका's आंसर इज Delhi. So broadly we agree that the answer is between A और D. वैसे एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल नहीं है गाइज. यू कैन सी दैट ऑप्शन B says हरिपुत्र's पेरेंट्स वांट हिम. ना, हरिपुत्र के पेरेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, है कि नहीं. हरिपुत्र के पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उनके पेरेंट्स के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते. तो B तो एलिमिनेट हो ही जाएगा. नॉट वेरी हार्ड, इट्स एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन. C says Hariputtar prefers book to outdoor activities. All we know is that he is looking forward to attending a 2-week book camp. Book camp में जाने के लिए excited है बंदा, बट क्या उसे book camp ज़्यादा पसंद है और दूसरे एक्टिविटीज़ कम पसंद है, हमें ये नहीं पता. तुम्हारे 2 फ्रेंड हैं राम एंड श्याम. श्याम से मिलने के लिए एक्साइटेड हो, तो क्या तुम राम से मिलने में एक्साइटेड नहीं होते. आई डोंट नो, हो सकता है दोनों को इक्वल प्यार करते हो, बट श्याम काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, कहीं गया हुआ था, एंड देयरफॉर यू आर एक्साइटेड. यू जस्ट डोंट नो, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन. बट हमें लड़ाई चल रही है A और D के बीच में. नाउ लुक एट D एवरीवन. जिन्होंने D मार्क किया है, कम से कम 15 लोगों ने D मार्क किया है. ध्यान से देखना, D मार्क करने वालों ध्यान से देखो. यहाँ लिखा है हरिपुत्र गोज टू सम टाइप ऑफ कैंप एवरी विंटर. नाउ एवरी विंटर का मतलब है आपके पास सारे विंटर का डेटा है, या आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है विच सेज दैट दिस गाय गोज टू अ विंटर कैंप एवरी विंटर. कैन यू गाइज हु हैव मार्क D टेल मी, ये D ऑप्शन में जो एवरी वर्ड है ये कहाँ से जस्टिफाई करोगे. हमारे पास डेटा कितना है, दिस विंटर एंड लास्ट विंटर. 2 विंटर के बारे में पता है. आर यू श्योर वो हर विंटर जाता होगा. बताओ. सारा, इज इट क्लियर. यस सारा, वेरी करेक्ट. सारा इज क्लियर नाउ. तो बताओ UH, हनी, मोदी, जिनके आंसर्स गलत थे उनसे पूछ रहा हूँ. जानवी, माधुरी, शिवाजी, आर यू गाइज क्लियर वाई योर आंसर इज नॉट करेक्ट. बिकॉज यू हैव नो डेटा. सपोज आपको लास्ट ईयर आपके पेरेंट्स ने बाइक दिलाई और इस साल उन्होंने आपको एक मैकबुक दिलाया. सो कैन आई नाउ से दैट योर पेरेंट्स गिफ्ट समथिंग टू यू every year or something expensive to you every year? I can't say that. I know about only 2 years. Maybe they did that in last 2 years.
और उसके पहले हर साल तुम्हें पिटाई पड़ती थी बर्थडे पे? आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर. So what is the elementary thing, guys? The elementary thing that we have to learn is information नहीं, basis नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमें माफ कर दो. That's how we read, है ना? So all of you got it right. Almost all of you on the app got it right. So देखते हैं अभी किसका किसका गड़बड़ है. बाकी सब समझ गए. वेरी गुड. हाँ, कीर्ति भी अंडरस्टूड इट. यस, यू गॉट दैट. वेरी गुड, करेक्ट. सो 2 साल आपकी किस्मत हो सकता है अच्छी हो, पेरेंट्स अच्छे मूड में थे, अच्छी बाइक दिला दी, बट उसके पहले के साल हर बर्थडे पे आपको वो पिटाई करते थे. हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल. हाउ डू आई नो एवरी विंटर, है ना? सो इट्स क्वाइट एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन. कीप योर बोथ आईज ओपन फॉर इंफॉर्मेशन. बराबर. ओके, नाउ ट्राई दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस क्विकली. आई वांट 100% एक्यूरेसी. जो गलत बोलेगा आंसर, उसे इस ट्री पे एटलीस्ट 2 नाइट और 1 डे का ट्रिप फ्री मिलेगा. दिस इज एन एक्चुअल ट्री एक्चुअली, and it's quite big. You can see these guys are like, I don't know if you can see it, but there are guys at the base of the tree, pretty big. Okay, it's called baobab tree. It's full of water inside it. तो जल्दी से आंसर बताओ. Let's see if you can do it. अमीशा शर्मा को ये पेड़ पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, तो आंसर बता दो करेक्ट. So those of you who have just joined, you're welcome. I can see your names, but I'm not taking your names. बहुत सारे नाम हैं तो टाइम लग जाएगा. But of course, I'm very happy to see you guys, and टाइम पे आ जाया करो, okay? तो ज़्यादा मज़ा आता है ना. ओके, और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना. सब्सक्रिप्शन का बटन तो प्रेस करना मैंडेटरी है. आर्टिकल नया आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके? तो सब्सक्रिप्शन और लाइक का बटन प्रेस करना इज नाउ इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 533 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके? हाँ, अच्छा. केपी कह रहा है पीपल पेड़ पे चढ़ सकता है, इस पे नहीं चढ़ पाएगा. वाह, बहुत बढ़िया. यस सारा, सेम क्वेश्चन है. कौन सा ऑप्शन ट्रू है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन? दैट्स इट. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रू है, बस ये बताना है. आंचल्स आंसर इज दिल्ली. प्रणय's आंसर इज ए. माधुरी's आंसर इज ए. ओके, अभी देखते हैं और क्या आंसर आ रहा है. डी फॉर श्योर. ए फॉर श्योर. ओहो, श्रद्धा, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन सेम है. ट्रू कौन सा है बताना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ओके? चलो, अमीशा तो इज सुपर हैप्पी विद ए ऑप्शन. चलो, ए ऑप्शन ही होगा फिर तो, है ना? तो डी और ए में फुल लड़ाई चल रही है जबरदस्त तरीके से, कांटे की टक्कर और देखते हैं आंसर क्या होगा. और द गुड थिंग इज आई एम वेरी हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ यू हैव टर्न्ड अप, ओके? दैट शोज द ज़ील दैट यू हैव. शिवाजी का आंसर है, सारा का आंसर है, अनीता का आंसर सी है, केपी का आंसर ए है. ओके, यानी इस बार लड़ाई इज नॉट बिटवीन ए और डी, इस बार लड़ाई इज बिटवीन ए और सी और डी. चलो, कम से कम बी तो कोई चूज नहीं कर रहा. चलो, आई एम हैप्पी. ए डी. चलो देखते हैं. ओके, लेट्स सी. सो अब क्वेश्चन क्या कहता है. रिसेंटली एक्स, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइज डोंट हैव टू रीड these technical names repeatedly. इनको X बोलना शुरू कर दो. Recently X, a substance found in the bark of Y, was discovered to be a promising new anti-cancer drug. Promising new means it may turn out to be anti-cancer. अभी confirm नहीं हुआ है. The Tasmanian baobab यानी B is an, or Y whatever you call it, Y is an evergreen tree that grows in the Tasmanian northwest. The Tasmanian यानी कि Y has a fleshy poisonous fruit. इसमें एक पोटेंशियल एंटी कैंसर ड्रग मिला है. आप कह रहे हो कि ए पक्का ट्रू है. ए में लिखा है दैट Y was valueless until X was discovered. How do you know about its value? हाँ जी, half the class is saying A is the answer. इस ट्री की वैल्यू पहले क्या थी, आपको कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? तुम्हारे अंदर कल कोई दूसरी नई क्वालिटी मालूम चल जाएगी. सपोज तुम्हारे घर वाले डिस्कवर करते हैं कि तुम उड़ सकते हो,
डज इट मीन अभी तक तुम्हारे घर में वैल्यू 0 थी, नालायक थे तुम, किसी काम के नहीं थे घर पे, ये मान लूं मैं पक्का? दे हैव डिस्कवर्ड अ प्रॉमिसिंग न्यू ड्रग, डज इट मीन that this tree had no value? Where is the basis? Where is the information? हाँ जी अमीशा, यस तुम्हें उस ट्री पे रहना पड़ेगा बिकॉज तुमने चैलेंज लिया था। अमीशा केप्ट ऑन सेइंग ये आंसर है। So is it clear everyone? We have no information about how valuable the tree was before दिस थिंग वॉज डिस्कवर्ड। तो हम कैसे इस पे कमेंट कर सकते हैं? यही तो हमारी प्रॉब्लम है, नॉलेज होता नहीं है, कमेंट पहले कर देते हैं। सो शिवाजी एंड यूएच एंड हनी, नो नॉट हनी मोदी एंड अदर्स, मैं सबके नाम नहीं ले रहा। क्लियर है ए आंसर क्यों नहीं होगा? इट कैन नॉट बी, मस्ट बी ट्रू। नाउ कुछ लोगों ने सी बोला है, फॉर एग्जाम्पल हर्षिता पटेल, हर्षिता ने बोला सी पक्का ट्रू है। सी में लिखा है सोडियम नाइट्रेट हैज क्योर्ड पीपल, इसमें लिखा है प्रॉमिसिंग न्यू एंटी कैंसर ड्रग, इसमें पोटेंशियल है ड्रग बनने का एंटी कैंसर। यहां लिखा है इसने क्योर किया है लोगों को वेरियस डिजीजेस से। कहां से आ गया? वेयर इज द इंफॉर्मेशन? शर्लक होम्स होता तो कूद गया होता बिल्डिंग से, फांसी लगा ली होती। वो कहता डॉक्टर वॉटसन व्हाट इज रॉन्ग विद यू, वेयर इज द इंफॉर्मेशन? ये एक एंटी कैंसर ड्रग होने के चांसेस हैं इसके अंदर। आप कह रहे हो इसका मतलब है कि ये लोगों को ठीक कर चुका है बहुत सारी बीमारियों से। सीआईडी के में जो एसीपी थे उनको भी बड़ा तुम पे डाउट हो जाता। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? मेजर गड़बड़, हर्षिता पटेल एंड शाहिद, योर आंसर वाज बी। ओके, शाहिद देखते आंसर क्या है। शाहिद कहता है सोडियम साइट्रेट इज पॉइजनस व्हेन टेकन बाय हेल्दी पीपल। आर यू श्योर? अगर ये पॉइजनस है तो ये सबके लिए पॉइजनस है ना, ये हेल्दी पीपल का बेस कहाँ है? वेयर इज द इंफॉर्मेशन? शाहिद, मोहम्मद अलमास, इज इट क्लियर? वाई द आंसर कैन नॉट बी बी? वाई हेल्दी पीपल? ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। पॉइजनस है तो पॉइजनस ही होगा ना। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, और एक के बाद एक आंसर्स निकाले जा रहे हो। जज साहब खुश नहीं होंगे, यस और नो? तो अब समझ आया आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है। क्या है? बाओबाब की जो फ्रूट है ना वो पॉइजनस है, तो क्या जरूर सही होगा? जरूर सही ये होगा कि लोगों को इसको खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट अगर वो खाते हैं तो उनकी हेडेक है, उनको मरना है, हम क्या कर सकते हैं? दैट्स इट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम मेकिंग? डिड यू गाइज फॉलो? क्या मैं सिखा रहा हूं मैं? यू आर सपोज टू फॉलो व्हाट? इफ यू हैव नो इंफॉर्मेशन डू नॉट कंक्लूड एनीथिंग। हमेशा पूछो सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है। यू आर सपोज टू गेट इनटू लॉ डिग्री कोर्सेज, यू आर सपोज टू ज्वाइन एनएलयूज। सबूत और गवाह नहीं तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालते। एंड ऑफ द स्टोरी। यस, सो रिमेंबर गाइस, शिवाजी, अनीता एंड हर्षिता, सारा एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको याद रखना चाहिए क्या सीखा इस क्वेश्चन से। हमेशा याद रखना क्वेश्चन से हम दो चीज़ें सीखते हैं, या तो क्वेश्चन सही होता है या हम उससे कुछ नया लर्न करते हैं। वी लर्न दैट इफ वी हैव नो बेसिस वी डू नॉट कंक्लूड एनीथिंग। सारा ठीक से पढ़ो इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है? बार्क में है ये साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट बार्क के अंदर, बट जो फ्रूट है वो पॉइजनस है। दैट्स इट। तो इसमें काफी लोगों का विकेट डाउन हो गया है। एब्सोल्युटली नेवर अज्यूम गाइज, नेवर अज्यूम, कभी अज्यूम मत करो अननेसेसरीली और अनलेस आस्क्ड टू डू इट। ओके, चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद यू वुड साइन ऑफ। बट इसमें गलती मत करना, ये काफी ही इजी क्वेश्चन है। सबूत नहीं तो आंसर नहीं, एंड ऑफ द स्टोरी। बताओ क्या ट्रू होगा जल्दी से। Sarah, that's the whole point. You are saying I thought means what? You misinterpreted.
यही तो नहीं करना है, शर्लक होम्स यही तो सिखा के गए हैं. ओके, ट्राई इट. ऑलराइट गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन. चंदन, दैट्स द वेरी गुड पॉइंट यू हैव मेड. यस, नज़रों के सामने होता है, दिखता नहीं है आंसर. दैट इज़ द होल पॉइंट. यही तो मैं सिखा रहा हूँ. और तभी तो हमेशा को, चलो हमेशा कोई बात नहीं. इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड नाइट ऑन दैट ट्री, देन इफ़ यू गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, देन you will have to eat one of these creatures. Okay, बहुत बढ़िया. ईश्वरी एंड वैष्णवी हैव आंसर्ड. वेरी गुड. अमीशा शर्मा इज सेंडिंग बी विद हार्ट्स. अमीशा, अभी गलत हुआ था, देख लो. योर हार्ट्स आर जिंक्स्ड. सेजल बी, प्रियांशु ए. ओके, चलो देखते हैं वाईटी पे क्या सीन है, यूट्यूब पे क्या आंसर बता रहे हैं. Sita Mahalakshmi, yeah, you can say that. Yes, we all see the point is, Sita Lakshmi, very simple. If you ask me a question which of the following is true, I will ask what is the information that we have, what is the basis. If I don't have basis, I will not say anything. I will not conclude anything. Okay. Achala says answer is 3. Pranay, which language are you talking in? I couldn't figure out anything. Is that Telugu? But I'm guessing. A, B, A, B, A. Okay, so I have started getting answers. B, B, A, D. So I'm getting A, B, D. Okay. So I think we are pretty safe when we say that third is not the answer, because third says narwhal fisherman. Now fisherman is not mentioned anywhere. We have no information. So C is very clearly out. Correct. Now majority of you have said the answer is B. Now let me ask you a question. How do you know that marine biologists, that too from all over the world, are working? Show me the information for working. Show me. All those of you who have marked B, please tell me, where is it talking about the fact that marine biologists are working? Okay, Pranay, I just guessed that. Okay, great. So can you please point out, guys, where did you see the information about working? We have seen that marine biologists are understandably concerned and they met last year to discuss. That's it. Information says they discussed. You are assuming they worked also. That's exactly what Sherlock Holmes will not allow you to do or think. Suppose I tell you I met my friend and we discussed buying Reliance Industries. Can you therefore conclude that I have bought it and now I am the richest man in the world, in India probably, or Asia? No. We can discuss so much. We keep on discussing so many things. Does it mean we are working on all that? Not at all. Therefore B, though very tempting, is definitely not correct. And D very clearly is wrong. I hope you understand. It says in 5 years, in 10 years, 5 years, 10 years. In 10 years, their numbers have gone down by 50%. So in next 10 years, it would be 25%. So what will happen in the next 5 years? They will become extinct. How can you say that? Then in next 5 years, their number would go down by half of the extinction rate of the last 10 years. This one is very clearly wrong, absolutely wrong. So this is one way we can get the right answer. That is A. What does A say? One way to increase narwhal population is to ban the fishing of narwhal. Q. Why? Because it says narwhal populations have decreased by 50% during the past 10 years. Marine biologists are understandably concerned and they met last year to discuss what steps to take things back to normal and reverse the trend. So out of the choices, which one must be true? Now if
their number is decreasing and you stop fishing them one way, it is not saying the only way. There may be other reasons why the number is falling. For example, disease. For example, fishing. For example, their habitat is shrinking. We do not know. But one way to increase the population is to ban fishing. Ban fishing means what? Fishing is taking place and you're banning it. If you ban it, then it is definitely one way of increasing the population. Because if you keep on fishing them, then very clearly their number would go down. Based on the information, only this can be true. No other option can be true. This is called very basic level of reading. Harshita, no, you don't have to worry about other causes. All you have to see is, can banning of fishing lead to number or increasing in number? Yes, it can take place. Is it the only way? Can't say. Can't say. This is what Sherlock Holmes talked about. Reading and looking at the information, not using your assumptions, just look at the information given and try to figure out the right answer. I hope you got the point, everyone. So before I sign off, I want all of you to confirm that this is what you would start doing in your practice sessions without fail. Correct? Yes. So Meenakshi says now she would have nightmares of Ranu Mondal. Okay. Some of your chats are getting somehow stuck. Just let me read it. Ayush, definitely, it's not given. But out of the choices given, you have to see which one is likely to be true. Okay. All right. So I hope you got the basic point. Vaishnavi, I have explained it. I hope you have heard the answer. Right. So I'll have to sign off now, but I hope you guys understood that we have to always deal with limited amount of information. They will not give us unlimited information. उसके बीच में से आंसर निकालना है. Correct? So keep on working on all this. Correct? Sara, हाँ, that's correct. But avoid करना है Sara. That's the whole idea. That's the whole game. अपना दिमाग नहीं लगाना है जहां मना किया हो दिमाग लगाने से. बस ये ध्यान रखना. Okay, so I'll see you again. Maybe we would have sessions again very soon. So keep on coming back. I enjoy, of course, taking these sessions, and let me know if I can help you in any other way. Download the Gradeup app, and more importantly, I told you article 555 आ गया है Indian Constitution में. According to that, you have to like this session and subscribe also. नहीं करोगे तो penalty है. Okay? तो याद रखना, मैंने तुम्हें नई information दे दी आज, तो करके जाना. ठीक है? Alright guys, I'll see you. Thank you so much everyone for watching. Absolutely, Sita Mahalakshmi, you are absolutely right. That's all. See you guys. Thank you so much everyone. Bye bye. Bye everyone.